Okay students, today we'll discuss potentiometer. As their name, potentiometer means potential difference को measure करना, right? It is a device used to measure the potential difference between any 2 points in electric circuit, right? Note this much, it is also used to measure the internal resistance of a cell, and also used to compare the EMF of two cells, right? So one by one we discuss all of the three using potentiometer, right? But first we discuss about potentiometer. Let us discuss its construction and principle. Okay, so first of all, if I'm talking about its construction, we take a wooden board, and on that wooden board, small wooden board, we take copper strips like this. That side, these two are copper strips, right? And this is another copper strips like this between the points A and this is B, right? On these copper strips from here to here, a wire is attached like this, right? There are some screws, and on these screws a wire is attached in between the points A and B, from A to B like this, right? This is our setup for potentiometer, and the point A is now connected with some battery like this, positive, negative, then some ammeter to measure the current flowing through the circuit, some key and rheostat, right? And then B. This is our complete circuit. This rheostat is used to control the flow of current, right? सर्किट के अंदर करंट का फ्लो, वायर के अंदर से कितना करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज़ डिसाइडेड बाय दैट रियोस्टेट. हम रियोस्टेट का यूज़ करते हैं इसका करंट फ्लो करने के लिए. द की इज़ ऑन ऑफ की, एमीटर टू मेजर द करंट, बैटरी सप्लाइज द करंट और एनर्जी टू दैट सर्किट, राइट? दिस इज़ आवर कंस्ट्रक्शन फॉर पोटेंशियोमीटर. नाउ लेट अस टॉक अबाउट प्रिंसिपल. तो पोटेंशियोमीटर इज बेस्ड on the fact that the fall of potential on the wire, on the portion of wire, on the some portion of wire is directly proportional to the length of that portion, right? If that is the main condition, right? If current area of cross section of that wire is remains same or constant, right? अगर करंट और एरिया फ्लोइंग थ्रू दैट वायर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, देन पोटेंशियल ड्रॉप ऑन द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू its length. Means we can write it like this: V directly proportional to length if current and area of cross section is remains same. Clear? This is our principle, right? So now let's discuss its proof, how it can measure, right? V directly proportional to L, ये हमने कैसे फाइंड आउट किया? चलिए आइए देखते हैं. हम इसका प्रूफ करेंगे कि V is directly proportional to L, right? As we know that from Ohm's law हमें पता है क्या कि V is equal to IR, right? And R is equal to rho L by A, right?
put this value of R here, V is equal to I rho by A into L. If current and area remain same, constant, and wire is also same, we use a single wire, not using different material, so resistivity is also constant, right? Then this term becomes constant, so we can write it like this. Let's say this term is K into L, where K is known as constant, known as potential gradient. That K is known as potential gradient, or K is equal to V by L, right? It's SI unit of K. If I'm talking about SI unit of K, that is what volt per meter. Okay, this is our potential gradient. So from here we can write like this: V is directly proportional to L. This is our principle, right? And K, potential gradient of a single type of wire, right? Let's say this wire A to B, this wire has potential gradient K, right? So this whole wire has constant potential gradient A. If current and area of cross section of that wire is same, then K is same, right? Let's suppose that this wire having some portion, I am taking this portion on this wire CD, that CD part also having the potential gradient as K, right? Any portion of that wire having potential gradient K. Clear? Why? Because in this wire C to D, current is flowing through this is same, I, area of cross section is same, resistivity means material of this wire is same, so potential gradient is also same. From here we also can write like this: K is equal to I rho by A, right? If these are same, then potential gradient for a single type of wire is same, right? This is our principle. Now we are discuss our first point to measure the potential difference using potentiometer, right? हम क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं? पोटेंशियल डिफरेंस, राइट? तो आवर फर्स्ट पॉइंट, डिटरमाइन the potential difference between two points in electric circuit using what? Potentiometer. तो potentiometer has few meter wire, right? Like this हमने अभी कंस्ट्रक्शन की थी, बट हम A और B पॉइंट्स के बीच में स्ट्रेट वायर लेके चलेंगे to remove complications, right? Our setup is like this using copper strip, right? But we can take like this point is A point and the wire is connected between A and B like this, right? There is a meter scale that is shown here like this. This is our meter scale, and this wire is few meter wire, means let's say the length of this wire is what? Capital L, complete wire AB. तो यहाँ हम देख सकते हैं कि AB is what? Capital L, right? And battery is connected with A. Let's say this is some battery like this. There is a battery, positive, negative, some ammeter, some key, some rheostat is connected like this with the battery. This is R. Clear? Now this R is used to make current constant, right? तो बेसिक कंडीशन क्या है पोटेंशियोमीटर के लिए? हमारे पास करंट एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, right? And we use the wire A to B, same material of wire used from A to B, right? Not like this ki here A to at this point some iron and after that copper wire is used, not, right? We have to make resistivity also constant, right? So the wire from A to B is continuous wire having same material, right? This is our setup. Now we have to find out, determine the potential difference between the 2 point in an electric circuit. तो let's suppose that मैं A point से मैंने किसी resistance को connect किया in a circuit
and between these points I have to find out, let's say this is R1, I'm using R here, so let's say this is R1. So between these 2 points I want to find out what? Potential difference, right? I'm connecting this with a cell. If this is positive, we have to connect the cell also positive in the same sense. If here is negative, then there is negative. There is cell key like this, right? That is E1 and K1, that is K. After that, this is connected with galvanometer, and then this galvanometer connected with the jockey. And what is the use of jockey? To find out the null point. Null point means there is no current flowing through that circuit. From the galvanometer means galvanometer, there is no current flowing through the galvanometer, or galvanometer shows no deflection, means zero deflection shown by galvanometer. That point is, let's suppose that here, and this point is C point, and this point is from A, the length of this point is L, right? And CB is what? CB is capital L minus small l, like this, right? So we have the 2 points in the electric circuit where we have to find out potential difference. ओके, तो लेट्स सपोज दैट हमें क्या फाइंड आउट करना है. अगर मैंने नल पॉइंट फाइंड आउट किया तो इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है. यहाँ से बैटरी से करंट आया, लेट्स से आई करंट, राइट? दिस आई करंट फ्लोइंग थ्रू दैट वायर एंड अगेन हेयर लाइक दिस, राइट? बट दिस करंट आई यहाँ से फ्लो नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि this is null point, and null point means galvanometer shows no deflection, no current flowing through here. Wheatstone bridge condition like this, right? तो अगर यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो ये सर्किट इस स्मॉल सर्किट को अफेक्ट करेगा? नहीं करेगा, राइट? कब? जब मैं इसको ऑन कर दूंगा करंट फ्लो करेगा, लेकिन करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट ओनली. दिस करंट इज नॉट इन दिस सर्किट, right? Means the potential over here, over this circuit, is equal to the potential of this wire. This wire is parallel with this resistance, right? Means we have to find out what? Potential between these 2 points. Let's say potential here is V, the value of V we have to find out, right? This potential V is here, and the length L of the wire is in parallel with this, so there is potential. The potential over here is also V. Simple. And according to the principle of potentiometer, that V is what? Directly V is equal to K, directly proportional to its length of that portion, that is L, and where K is what? Potential gradient of wire. K is potential. अगर मैं कहूँ A से B वायर थी कैपिटल एल लेंथ की, इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना था? के. तो ए सी वायर भी तो उसका पोटेंशियल भी क्या होगा? के ही होगा. दैट्स वाई वी इज इक्वल टू के एल. मीन्स हमें यहाँ पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, और ये सर्किट इसके साथ पैरेलल में है, तो दोनों का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा, राइट? नाउ अगर मैं इस वी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ तो वो क्या होगी? के एल. इस के की वैल्यू मुझे इस सर्किट से फाइंड आउट करनी है, इस सर्किट का कोई रोल नहीं है. तो मतलब विदाउट इंटरफेयरिंग दिस सर्किट आई कैन फाइंड आउट द पोटेंशियल ओवर हेयर, राइट? दैट इज पोटेंशियोमीटर. ओके, तो नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? वैल्यू ऑफ के, राइट? एंड पुट द वैल्यू ऑफ के ओवर हेयर, वी गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट? वी. दैट इज वी हैव टू फाइंड आउट, राइट? नाउ के की वैल्यू हम कहाँ से फाइंड आउट करेंगे? लेट्स से पूरी कंप्लीट वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है? के. वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट इज कैपिटल के, राइट? तो पूरी वायर के ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? पोटेंशियल ड्रॉप आइए देखते हैं. बैटरी ई, इसका ईएमएफ कितना है? ई ईएमएफ वायर के ऊपर होना चाहिए था अगर मैं किसी रेजिस्टेंस का यूज़ नहीं करता. लेकिन अभी हमने क्या किया? देखिए, ई पोटेंशियल बैटरी से निकला, लेकिन पोटेंशियल ड्रॉप कहाँ हुआ? यहाँ से देखेंगे कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, वायर तक पहुँच गए. इस तरफ आइए, इस तरफ की जैसे ही कनेक्ट किया तो आर के ऊपर क्या होगा? सम पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और वो कितना होगा? आई आर. इतना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, राइट? आई करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट एंड रेजिस्टेंसेज आर, तो आई आर पोटेंशियल जो है वो यहाँ ड्रॉप हो गया.
तो आगे कोई ड्रॉप है नहीं, तो पोटेंशियल के वायर के ऊपर जो पोटेंशियल हुआ टोटल ए टू बी, तो वी ए टू बी हमारे पास क्या हुआ, ई माइनस आई आर पोटेंशियल पहुंचा वायर के ऊपर, सिंपल, राइट। एंड पोटेंशियल वी ए बी इज व्हाट, इक्वल टू के, एंड लेंथ ऑफ द वायर इज व्हाट, कैपिटल एल, ए बी की लेंथ ना, ए बी की लेंथ इज कैपिटल एल, राइट। तो वी ए बी हमारे पास क्या था, ई माइनस आई आर दैट इज इक्वल टू के, एंड एल गोज हेयर, दैट इज एल, दैट इज द वैल्यू ऑफ के। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास पोटेंशियल क्या होगा, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर अपॉन L, दैट इज द वैल्यू ऑफ K इंटू स्मॉल l, राइट। दिस इज द वैल्यू ऑफ अवर पोटेंशियल, बट हेयर वन मोर टर्म, दिस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज इन टर्म ऑफ करंट। इफ आई वांट टू रिमूव दैट करंट, तो लेट्स से करंट की वैल्यू क्या होगी, करंट क्या होता है हमारे पास, करंट होता है टोटल EMF ऑफ द सेल divided by total resistance, right? If I'm say like this, the resistance of the wire is what, small r, small r is the resistance of the wire, and here external resistance is capital R. तो in this circuit total EMF क्या हुआ, E, total EMF is what, E, एक ही बैटरी है वही इस सर्किट में, राइट। टोटल रेजिस्टेंस क्या हुआ, देखिए total resistance R and with series capital R, right? So there are two capacitors, sorry there are two resistance, both are in series, तो total resistance क्या हुआ, R plus small r. This is the value of current, the value of current put over here, we get, I'm remove, let's say here, say like this, तो V is equal to what, E minus I R L by L, I की वैल्यू हमें यहाँ से यहाँ पुट करनी थी, लेट से पुट कर देते हैं, E माइनस वैल्यू ऑफ I इज E R अपॉन R प्लस R, राइट, इंटू L अपॉन L, राइट। सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, E R, ये प्लस का ये माइनस का कैंसल आउट, ई स्मॉल आर राइट, डिवाइडेड बाई आर प्लस आर, एलसीएम लिया तो इनटू एल बाई एल। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल लाइक दिस, आर डिवाइडेड बाई आर प्लस आर एप्सिलॉन एल बाई एल। दिस इज द वैल्यू ऑफ टोटल पोटेंशियल, राइट। मीन्स द पोटेंशियल over here is what, this, using potentiometer, यही हमें find out करना था, using potentiometer find the potential difference between two points, right? तो हमने potentiometer का यूज़ किया है, without disturbing this circuit we find the potential difference over here, right? So this is the potential difference between the two points, okay?